Okay, so Deepa, let's proceed ahead with your snap for material science, and this is for the interview of Polytechnic lecturer in Uttar Pradesh, and you have already done your MTech in welding technology from NIT Surathkal, I suppose, right? No, sir. NIT Tiruchirappalli. And NIT Trichy, yes. So, okay, so Deepa, material science mein, do you know something about the iron carbon diagram? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so can you name the 3 allotropes of iron? Sir, allotropes of iron, sir. Sir, austenite, delta ferrite, alpha ferrite. Okay, tell their structures also. Sir, Crystal structure. yes, sir. Austenite is of FCC, means face center cubic, and ferrites, both ferrites are of BCC structure. So, what is the difference between BCC and FCC structures? Sir, in BCC structure, what happens? The number of atom differs. Sir, packing factors differs, and coordination number of atoms also differs, sir, there. So, what is the coordination number of FCC and BCC? Sir, coordination number of FCC is 12, and for BCC it is 8. Okay. Now tell me, on the basis of these differences, which one is supposed to be more hard, FCC or BCC? Sir, BCC is supposed to more hard, sir. But out of austenite and ferrite, which one is hard? Sir, ferrite is hard, sir. Ferrite is hard. Are you sure? Yes. Alpha. Yes. Yes, sir. Alpha ferrite. Alpha is very soft iron. Sir, austenite is soft iron, sir. Gamma austenite is soft. Yes, Are sir. you sure? Sir, then I have to read, sir. Okay, so what is eutectoid point? Any idea about that? Eutectoid point, yes, sir. Eutectoid point where the one solid convert into the two solids, sir. Like in iron carbon diagram, at 725 degrees Celsius, austenite converted into the pearlite and alpha plus Fe3C. It's called pearlite. Alpha plus Fe3C. Yes, sir. What is Fe3C called? It's cementite, sir. Fe3C. Cementite is very hard, right? Yes, sir. And alpha? Alpha, sir, alpha is, sir, I'm getting confused, sir. Alpha, sir, it is of BCC structure, so sir, it is hard only, sir. Alpha is the purest iron. Yeah, yes, sir. Purest iron is always very, very soft. Okay, can you tell me when you take iron ore, what is first produced? You know, Sir, yeah. First wrought iron, sir. Okay. For after that, we increase the increase the carbon percentage. It's like it's getting changed, sir. Like low carbon steel, high carbon steel, medium carbon steel, like that, sir. What do you mean by pig iron? Sir, pig iron, sir. Sir, pig iron, sir. So is it ore form, sir? Ore form of iron is called pig iron. Have you heard about blast furnace? Yes, sir. Yes, sir. What do you get in blast furnace? So the product is wrought iron, sir. Wrought iron, sir. Wrought iron. Yes, sir. And pig iron is obtained from which furnace? Sir, sorry, sir. Have you heard about Kabola furnace? Yes, sir. Actually, sir, I didn't read about furnace. Like, didn't go through. I have to see. Okay, triple T diagram you are aware, Deepa? Yes, sir. Triple T diagram I'm aware of. Tell me how martensite is produced. Sir, in triple T diagram, sir, when we have austenite, sir, and when we cool very fast, like we don't go to the nose region and cool it very fast or quench it, then we got the martensite, sir. And how benite is formed? So benite is below the nose we go and cool it some time. Then the benite forms, sir. What is that process called? Sir, benite is from Aus tempering, sir. Aus tempering. And what is Mar tempering? Mar tempering, sir. What happened when when we get the martensite? What happens during the solidification? On the upper layer we get the martensite, but inner side there is a austenite, retained austenite there. So sir, we don't want that retained austenite, sir. So what we do, we quench just above the martensitic start temperature, and we hold it for some time, and then again we quench it. Then we get the martensite. That is called mar tempering, sir. Like the retained austenite is not there, sir. Okay, tell me something about the normalizing process.
Sir, normalizing process is like we do the like in authentic is there, sir. We cool it in the air cool, sir. We don't cool it in the furnace, sir. It is called like normalizing process, sir. Which property is improved during normalizing? Sir, so coarse like coarse perlite converted into the fine perlite, sir. Here. Sir, hardness, sir, I don't know. So What about hardness may strength? increase. So strength increase, sir. Okay, what do you understand by annealing? Sir, annealing is like slow cooling process. It is same as normalizing, but we cool into the in the furnace only. Why annealing is done? Sir, sir, when the cold working is there, sir, recrystallization, sir, annealing. Sir, I know the answer, but I don't know how to answer. So, like grain growth is there something आप like हिंदी that? में बोल सकती हैं अगर दीपा आपको आंसर में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप फ्रेम करें हिंदी में. हाँ, सर, annealing. Annealing करते क्यों हैं? सर, सर रेसिडुअल स्ट्रेसेस जो ट्रैप होती हैं उसको हटाने के लिए भी करते हैं हम एनेलिंग, सर. ओके. सर जो आपने कोल्ड सुना प्रोसेस एनेलिंग करके भी एक चीज होती है. प्रोसेस एनेलिंग, सर एनेलिंग के टाइप्स होते हैं, सर. प्रोसेस एनेलिंग, स्पेरिडाइडिजल, डिफ्यूजन एनेलिंग, राइट सर. प्रोसेस एनेलिंग, सर, जो एवर लाइन होता है सर उसके नीचे से होता है प्रोसेस एनेलिंग, उसको बोलते हैं, सर. ताकि वो स्फेरोडाइजिंग क्या होता है बता सकते हैं आप? स्पेरोडाइजिंग, सर, सर जो निडल फॉर्म ऑफ फेराइट्स होते हैं, सर, उसको सर उसका फॉर्म चेंज करने के लिए ताकि वो मोर डक्टाइल हो जाए, सर. इसलिए हम स्पेरोडाइजिंग करते हैं, सर. अच्छा, टेम्परिंग क्या होता है? सर टेम्परिंग जब मार्टेनसाइट होता है, सर, उसको हम क्या करते हैं कि उसका जो रिटेन ऑक्साइड होता है उसका हार्डनेस कम करने के लिए, सर, या फिर डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए कह सकते हैं हम, उसको थोड़े उसका सॉल्ट मतलब उसको एक हीट पे ले जाके उसको फिर कूल डाउन करते हैं. तो यहाँ पे जो हमको मार्टेनसाइट मिलता है उसको हम टेम्परिंग बोलते हैं. ये भी एक तरह का क्वेंचिंग भी होता है. ओके. कास्ट आयरन में कितना % कार्बन होता है? 2.1 से लेके मतलब 6.67 हम लोग जाते हैं वहां तक, तो वहां वो होता है. ओके. कास्ट आयरन की कुछ एप्लीकेशंस बताओ. सर कास्ट आयरन हम यूज करते हैं, सर डैम्पिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है कास्ट आयरन की. और सर हम ये इंजन ब्लॉक्स बनाते हैं, सर, कास्ट आयरन से. पिस्टन बना सकते हैं कास्ट आयरन से, सर. वहाँ पे पिस्टन बनाते हैं या सर सिलेंडर बनाते हैं? सर सिलेंडर और पिस्टन दोनों, सर. एल्युमिनियम अलॉय या फिर कास्ट आयरन, दोनों में से कोई भी एक ले लेते हैं. एल्यूमिनियम के पिस्टन तो सुने हैं मैंने, कास्ट आयरन के नहीं सुने. श्योर बनता है पिस्टन कास्ट आयरन का? पढ़ा था, फिर गलत पढ़ा होगा मैंने. एल्यूमिनियम का पिस्टन बनाने का तो रीजन ये है कि उसमें से हीट हमें बाहर भेजनी है. और जो सिलेंडर है वो इसलिए कास्ट आयरन का बनना चाहिए क्योंकि उसमें फोर्स लगती है सिलेंडर में. पिस्टन पे तो फोर्स लगे तो पिस्टन मूव कर जाता है. तो पिस्टन का स्ट्रॉन्ग होना इज नॉट रिक्वायर्ड, पर सिलेंडर का स्ट्रॉन्ग होना इज रिक्वायर्ड. अब कास्ट आयरन में आपने बताया रेजिलियंस बहुत अच्छा होता है, ये बताया? यस सर. रेजिलियंस मेजर कैसे करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से? सर अप टू द इलास्टिक लिमिट, सर. जो भी एनर्जी होती है उसको बोलते हैं, और उसका एरिया अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखेंगे तो हमें उसका जो एरिया मिलता है उसको बोलते हैं रेजिलियंस. अच्छा, स्टील के अंदर अगर मैं टंगस्टन डाल रहा हूँ तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है उससे? सर हार्डनेस बढ़ती है टंगस्टन से, सर. कौन सी हार्डनेस? सर हॉट हार्डनेस. हॉट हार्डनेस होती क्या है? सर हाई टेम्परेचर पे जो रिटेन कर लेता है अपनी हॉटनेस प्रॉपर्टीज को हॉट हार्डनेस बोलते हैं. क्रीप क्या होता है? सर क्रीप एक स्लो डिफॉर्मेशन होता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम में एक स्लो डिफॉर्मेशन होता है जो कि परमानेंट होता है एट अ कांस्टेंट स्ट्रेस एंड टेम्परेचर. अच्छा, फटीग स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं आप? सर मेजर का तो नहीं पता, लेकिन होता क्या ये पता है. फटीग स्ट्रेंथ, सर, जब साइक्लिक लोड लगता है. कोई ऐसा कंपोनेंट बताओ जिसकी फटीग स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं, जो फटीग फेलियर जिसमें होता है. साइक्लिक लोडिंग. हाँ ये सर बियरिंग. तो बियरिंग्स की लाइफ कैसे डिसाइड करते हैं? सर बियरिंग की लाइफ डिसाइड करने के लिए, सर बॉल बियरिंग होता है या फिर रोलर बियरिंग होता है. उसकी लाइफ कैसे नंबर ऑफ साइकिल, सब नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिलियन, सर, कितना चलते हैं, सर. ओके दीपा, लेट मी गिव यू फीडबैक.
दीपा एनालिसिस करो, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे सारे, कहाँ पे ट्रबल आ रहा है, कहाँ पे रुक रहे हैं आप, थोड़े थोड़े रुक जा रहे हैं हर जगह जाके। ठीक है सर, ठीक है। कुछ जगह पे जाके आप को प्रॉब्लम आ जा रहा है। आयरन कार्बन डायग्राम अभी भी तुम्हें याद है क्या क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, उनको नोट कर लो। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी हुआ है, लेकिन कॉपी पे नोट कर लो कि मटेरियल साइंस से साहब ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछे हैं और ये प्रोबेबिलिटी होती है। और मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, राइट? क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो फीडबैक देते हैं तो दिमाग में होते हैं, तो देन आई आस्क द सेम क्वेश्चंस। तो अब तुम समझ लो कि इंटरव्यू में ये टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा कपोला फर्नेस से पूछेगा, पिग आयरन को पिग आयरन क्यों बोलते हैं ये भी पूछेगा, ब्लास्ट फर्नेस से पूछेगा, वो तुमसे मार टेम्परिंग भी पूछेगा, वो तुमसे टेम्परिंग भी पूछेगा, स्फेरोडाइजिंग भी पूछेगा। तो मटेरियल साइंस में वो ये चीजें पूछेगा, राइट? इसका एक बार सारे का सारा एनालिसिस करो और मैं अभी आपको 10 में से आपको कोई 6 के आसपास नंबर मिलेंगे मटेरियल साइंस में। आपको 7.5 चाहिए, राइट? यस सर।